हाय गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू द वीडियो। तो पिछली जो हमने वीडियो कंप्लीट की थी उसमें 50th क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था 70th बीपीएससी का पीवाईक्यू एनालिसिस, जिसमें हमने सारे जीएस के क्वेश्चन एक्सेप्ट द मैथमेटिक्स और करंट अफेयर के क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। ओके, तो इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। फ्रॉम 51 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ melamine used for making floor tiles? ओके, सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड जो फ्लोर टाइल का जो भी मटेरियल होगा दैट शुड बी ड्यूरेबल, that should be hard and not something which get easily reformed. We need durable material. Okay, so if you look into the options: polyethylene, thermoplastic, PVC, thermostatic plastic, so the answer would be thermostatic plastic. Now why? Because these are the that are once material that are once molded and hardened. They cannot be remelted or reshaped. And thermostatic plastic is known for durability, heat resistance, strength. Because of these qualities, it is good for making floor tiles. Apart from this, polyethylene, thermoplastic, PVC, these are also good, but they are not example of melamine. Instead, they belong to the category of thermoplastic. They can be melted and reshaped. Okay. So 51st question we have done. This is maths question जो हम दूसरी सीरीज में देखेंगे. 53rd question, which of the following is the cause of rural to urban migration in India? The options are high labor demand in cities. Yes, there is high labor demand in cities. There is unbalanced rural urban development. This is also correct. There is few jobs in rural area. This is also correct. So the answer would be all of the above. In India, there is a distress migration. There is distress migration. What is distress migration? Distress migration basically means ki it is kind of forced from rural to urban because of lack of opportunities in rural areas, और एग्रीकल्चर भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है. There is disguised unemployment in agriculture sector. So a lot of things are there जो फोर्स करता है from rural to urban migration, और उसके ये सब सारे causes हैं. Okay, this is again current affair. Now this, the 100 Years of INC in Bihar was edited by, the answer is PN Oझा. और इसका बुक का जो टाइटल था, दिस इज फैक्चुअल क्वेश्चन, तो इसमें ऐसे कुछ एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं. बुक का क्वेश्चन था हिस्ट्री ऑफ आईएनसी, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बिहार 1885 to 1985, which is edited by PN Oझा. In which organism does spore formation occur as a mode of reproduction? Okay, so spore formation as a mode of reproduction also occur in algae, it occur in fungi, it occur in yeast and fern की भी बहुत सारी species और varieties होते हैं. क्या पता किसी एक में spore formation होता हो, we never know. But specifically अगर हम देखें कि spore formation as a mode of reproduction किस में होता है, तो वॉइस का हुआ था, that is fungi. इसमें क्या होता है कि spores, these are lightweight. These are lightweight and they easily disperse via water, air. So when these spores land in suitable environment, they germinate and grow into new.
एल्गी, यस देयर आर सर्टेन एल्गीज जिसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है, और भी तरह के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एल्गी में भी देखा जाता है, बट स्पेसिफिकली स्पोर फॉर्मेशन हैपेन इन फंगाई, सो आंसर हियर इज फंगाई. In yeast particular, the main specific mode of reproduction here is budding. 57th question. When did Britishers shifted the capital to Delhi? The answer here is 1911. और भी इसके साथ information है, like it has been announced during Delhi Darbar, which was attended by which was attended by George V and Queen Mary. And this transfer of capital happened during the reign of Lord Hardinge. So, announcement of shift to capital from Calcutta to Delhi has been made in 1911, but actual transfer took place in 1931. The exact date was 30th February 1931. Okay. Please, eighth question. Zozila Tunnel will connect which of the following places? This is factual question and answer is Srinagar and Leh. आप ला से ले को लर्न कर सकते हैं, श्रीनगर एंड ले. करंट अफेयर, दिस इज ऑल्सो करंट अफेयर, बट इम्पॉर्टेंट था कि इसमें दो नई कंट्रीज ने WTO को ज्वाइन किया था. इट हैपेंड एक्चुअली इन अबू धाबी, यूएई में. और दो जो नए कंट्रीज थे जिन्होंने WTO को ज्वाइन किया था, वन वाज कोमोरोस, आई डोंट नो द एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन. द अदर वाज, आई थिंक, समथिंग लाइक टिमोर लेस्टे. प्लीज यू चेक द प्रोनाउंसिएशन. दो कंट्रीज ने WTO को ज्वाइन किया था. 61 question. Which one of the following rivers is different from others? The answer is Narmada. Why Narmada? Because हमने पढ़ा है कि Narmada and Tapi, these two rivers are west flowing rivers. West flowing rivers. That means they drain into Arabian Sea. बाकी जितने भी रिवर्स दिए गए हैं, तुंगभद्रा, पेन गंगा, महानदी, ये सारे रिवर्स दे ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल. That's why the answer here would be Narmada. Okay. Again, maths question. This question. Which of the following is the first artificially prepared element? So the first artificially prepared element is this, जिसको हम बोलते हैं technetium. Technetium. It appears like platinum. और इसके बारे में देखते हैं, इस पर्टिकुलर एलिमेंट के बारे में देखते हैं. It is lightest. It is lightest, and all all isotope of this particular element radioactive are radioactive, and primarily it is utilized for medical test. That radioactive isotope are utilized for medical test. दूसरे ऑप्शंस के बारे में देख लेते हैं. थोरियम, दिस इज TH इज फॉर थोरियम. थोरियम इंडिया में पाया जाता है मोनाजाइट सैंड्स में. वेस्ट कोस्ट में प्राइमरीली काफी पाया जाता है थोरियम. थोरियम इज इम्पोर्टेंट फॉर अवर न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर सिक्योरिटी. ओके, अनदर ऑप्शंस, इसको बोलते हैं टिलेरियम. टी को टिलेरियम. टी is mainly titanium. Titanium is an chemical element and it found only as oxide. Found only as oxide.
So the answer here would be the first artificial prepared element is the technetium. Okay, again current affair. Who gave the slogan "Do or Die" and when? Gandhiji gave during Quit India movement. Very easy question, one of the easiest in this paper. 66. Which of the following is a fluid part of blood? Okay, so blood is made. पहले तो blood is made by two major component. One is fluid, another is cellular. So when fluid part में हमारा प्लाज्मा आता है, सेलुलर में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी आते हैं. तो ये प्लाज्मा जो फ्लूइड पार्ट है, दिस इज प्लाज्मा. ओके, और one must know that plasma consists 90 to 92% of water. This is yellowish in color. This is yellowish in color. इसके साथ हम बाकी ऑप्शंस के बारे में भी देख लेते हैं, लाइक डब्ल्यूबीसी. व्हाट डब्ल्यूबीसी डज एक्चुअली, व्हाट ब्लड प्लेटलेट डज, व्हाट आरबीसी डज. आरबीसी का जो मेन फंक्शन है, द मेन फंक्शन इज कैरी ऑक्सीजन टू टिश्यूज एंड remove carbon dioxide. The function of blood platelets is it involves in blood clotting. It helps in blood clotting actually. Now WBC का जो main function है, that help in fighting infections. Okay. Another question. Consider the following about Ajivika sect. Ajivika sect. Makhali Gosala was its important leader. Yes, he was. He was an important leader of Ajivika sect. Central idea of the philosophy was Niyati, that is fate. Yes. The discrimination basis of caste and class. No. The Ajivikas had regular sabhas for the meeting. Very general statement. So the answer here is C. Now, first one need to understand that this particular leader, he was contemporary. बहुत बार contemporary वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं. He was contemporary of Mahavir and contemporary of Gautam Buddha. Contemporary of Gautam Buddha. And the main central idea of this is Niyati. Niyati, that is faith. So what this particular sect propagate is that in our life everything is predestined. और हमारी लाइफ में वही होगा जो प्रीडेस्टाइंड है, नथिंग एल्स. या हमारे जो प्रेजेंट एक्शन है उनका जो स्कोप है टू चेंज एनीथिंग इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. सो फेथ इज समथिंग विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज पर दिस सेक्ट. और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड क्लास नहीं था. आजीविकाज एट रेगुलर सभास फॉर मीटिंग. यस, इट वाज देयर. वेरी जनरल स्टेटमेंट. मौर्यास, मौर्यन एम्पायर का पैट्रोनॉज, they got, like many kings have donated the caves for Ajivika sects also. Okay. Which of the following minerals occur in the Minas Gerais province of Brazil? This particular area is famous for iron ore. It is one of the largest producer of iron ore in world, which is situated in Brazil. Okay. The first Hindi daily newspaper to be published in Bihar. The answer here is सर्वहितैषी. वेरी फैक्चुअल. ठीक है, कुछ और कीवर्ड्स देखते हैं इसमें. सर्वहितैषी जो 1874 में स्टार्ट हुआ था. Now उद्योग, इट इज एडिटेड बाय विजयनंद त्रिपाठी. इसके बारे में मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं क्षत्रिय समाचार के बारे में. सो वी आर स्किपिंग देयर हियर. बाकी जो चैतन्य चंद्रिका है, दिस इज बाय कृष्ण चैतन्य गोस्वामी. Okay, so the first Hindi daily newspaper in Bihar was Sarvahitasi.
Which of the following has highly elongated elliptical orbit? Answer here is comet. Now, comet जो है, it appear as a tail-like structure, and comet is composed of dust, ice, rocky material, and it has highly elliptical orbit around Sun. Now, what is asteroid? Asteroid has primarily asteroid are found in asteroid belt. Where is this belt situated? It is situated between Mars and Jupiter. इनके बीच में एक एस्टेरॉयड बेल्ट फाइंड की जाती है, उसी में हमें एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं. Okay, meteorite and meteor. The basic difference about these two things is that there are certain elements जो हमारे अर्थ सरफेस में, these are cosmic element जो हमारे अर्थ सरफेस में इंटर करते हैं. ओके, तो जो इंटर करते हैं उनको मीटोराइट बोलते हैं. बट व्हाट, जब मीटोराइट अर्थ सरफेस पे इंटर करके बर्न हो जाते हैं, व्हेन मीटोराइट बर्न अपॉन एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर, जिनको हम शूटिंग स्टार्स ही बोलते हैं. सो दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अर्थ सरफेस पे पहुंचना, फिर उसके बाद बर्न होना, विच इज कॉल्ड शूटिंग स्टार्स, फिर उनको एक नया नाम दे दिया जाता है मीटियोर. दिस इज द मेनली बेसिक डिफरेंस. Meteorite which arrives at Earth surface, and सभी मीटोराइट बर्न नहीं होते हैं. सो जो मीटोराइट बर्न होते हैं अपॉन रीचिंग द अर्थ सरफेस, विच और ऑल्सो कॉल्ड शूटिंग स्टार, उनको फिर हम मीटियोर बोलते हैं. ओके, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज करंट अफेयर. This is also current affair, but one must know the position of Indian manufacturing mobile phone is second. Which of the following city is located along the side of river Sign, whatever the pronunciation about this? The answer is Paris. Again, current affair. Okay. ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर्स इसमें बताने हैं. अगर आपको सिर्फ ये पता, आईने आजाद हिंद फौज का हेडक्वार्टर, दैट वाज आई, दिस पर्टिकुलर थिंग इज बाय सुभाष चंद्र बोस. जिनका हेडक्वार्टर रंगून था. वहां से उन्होंने एक रेडियो भी स्टार्ट किया था. रंगून था तो फोर्ट का डी होगा. सो अगर एक ऑप्शन पता है तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें. बट विल लुक इनटू अदर थिंग्स एज वेल. स्वदेशी सेवक होम, इसका ही हेडक्वार्टर है. यूनाइटेड इंडिया हाउस, अगेन दिस आंसर. देन युगांतर आश्रम, दिस इज ऑल्सो हियर. सो द आंसर इज डी. ओके, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम इतना ही रखते हैं. उसके बाद दूसरी वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चंस देखते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी.